Now there we will discuss some problems where we will check the differentiability of a function at a point. See this question, fx is sin x square upon x, x not equal to 0, x equals to 0, it is 0. At x equals to 0 we have to check differentiability. Suppose question comes ki, what about the continuity? So you know you can check continuity also. Right now I am checking differentiability. Fine. So at x equals to 0 we have to check the differentiability. We know left hand derivative equals to right hand derivative. If both are equal, then we can say function is differentiable at point at x equals to 0. Now I'll write left hand derivative LHD. That we know limit h tends to 0 minus f 0 minus h minus fi f0 upon minus h. This is our left hand derivative. Now we'll put limit h tends to 0 minus, no need to put right now minus, because minus will drag the condition. So x 0 minus means x not equal to 0. X not equal to 0 is this one. So we'll put this functional value in this. So sine 0 minus h square upon this x is minus h. f0 we have 0 at x equals to 0 and upon this is minus h. Correct till here? Understood? Now we'll simplify this. This is now limit. So limit h tends to 0 sine h square, this is going to be h square, minus h whole square is positive and minus minus plus h square. And this you know what happens, this is nothing but 1 sine theta upon theta, theta tends to 0, theta tends to 0, this is theta square also tends to 0. That is why sine h square upon h square is 1, correct? Next, we'll go to right hand limit, right hand derivative. Fine. This is limit h tends to 0 plus f point is 0. So 0 plus h minus f0 upon h. Correct? This definition you have to remember. Left hand derivative and right hand derivative. Now we'll substitute here limit h tends to 0 plus. Now 0 plus is not equal to 0. So again this condition will come. X not equal to 0. So sine in place of x 0 plus h square upon x, which is h minus f0 is 0 given 0 upon h. Correct there? Now we'll simplify this limit, which is limit h tends to 0 sine h square upon h square will come. This h will go in denominator. Fine. And this is also what? 1. So LHD is 1, RHD is 1. Fine. So what will happen? Both are equal. So function is differentiable at x equals to 0. fx is differentiable at x equals to 0. Fine. This way we can check the differentiability of a function at a point, whatever point it is given. Fine. It is almost similar like in continuity, fine, or in limit. Everywhere it is limit. You know how to solve limit. If you will say, sir, can I use L'Hopital? Why you will use L'Hopital here? Sin theta by theta is 1. Correct? Theta tends to 0. So h square, h tends to 0. So h square also tends to 0. That means sin h square upon h square is 1. Correct? So this way we can check the differentiability of a function at a point. Now we'll take one more example. एक और एग्जांपल से हम और क्लियर होंगे. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल करना है डियर. दैट्स इट. दिस इज टू वर्क वी हैव टू डू टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी. Now we'll see one more situation. fx equals to x into mod x at x equals to 0. This much information only it is given. Now we have to check whether at x equals to 0 this function is differentiable or not. Fine. So first of all, it's again a operator came mod x. So we know we have to use the property
So what we can write, fx equals to x into x when x greater than 0, so mod x becomes x, fine. This, it becomes x into minus x when x less than 0, correct? So what will happen, fx now defined like this way, x square when x greater than 0, and this is minus x square when x less than 0, correct? So this way we define function. Now I am not going to do here LHD and RHD, that way also you can do, not a problem. What I will do, I will check f dash x, fine, f dash x at greater than 0, so what will happen, this is 2x, when x greater than equals to 0, we differentiate it. I believe basic differentiation all of you know. And f dash x at x0, what will happen, this will be minus 2x. So both are not equal, correct? So this is not differentiable, at x equals to 0. It's not differentiable at x equals to 0. So see, in this sum, I have used a different methodology. Rather going LHD and RHD, that way also you can do. LHD, RHD से भी कर सकते हैं, not a problem. But unnecessary why will take so lengthy method? वो हम कब कर सकते हैं जब ये f dash वाला कंसेप्ट नहीं यूज होता, ठीक है? ऑपरेटर वाले में हमने क्या किया, x mod x square when greater less, these two situation came, this fx, and then f dash x 2x and f dash x is minus 2x. So these two are different, so it is not differentiable, ठीक है? बेसिकली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी क्या होती है, डेरिवेटिव ही होती है, f dash x होती है ना वो, और राइट हैंड डेरिवेटिव f dash x होता है, वो भी f dash x होता है, तो दोनों इक्वल होता है तो डिफरेंशिएबल होता है, बट दोनों f dash x यहाँ डिफरेंट है, so it is not differentiable at x equals to 0, correct there? So I used another methodology. Now we'll see wherever we can use this method or our LHD and RHD method. So go through this once again. You have to write now. If I'll say what will happen to, again I took some example, 2x plus 3 mod 2x plus 3 at x equals to minus 3 by 2. Check the differentiability. Again it is not differentiable. See why I take minus 3 by 2? Because this u equal to 0, you will get x equals to minus 3 by 2. The question came, find check the differentiability of this type of function. So x into mod x it looks, x into mod x, where we came to know it is not differentiable. So this also it is not differentiable at x equals to minus 3 by 2. So ऐसे कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है? fx equals to, if I have written 5x plus 3 divided by mod 5x plus 3 at minus 3 by 5, x equals to. This is also not differentiable. आप इस मेथड से करें या फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव से करें. So again this function is also not differentiable. इसका LHD और RHD इक्वल नहीं आएगा. या तो अपने प्लस h माइनस h वाले मेथड से करो या फिर इस मेथड से करो, ठीक है? बट ये मॉड की प्रॉपर्टी यूज करनी होगी ग्रेटर में और लेस में, जो व्हाट आई हैव यूज्ड हियर, ठीक है? जो इसके बाद ये निकल के आया, ठीक है? So we'll move to another situation here. Look at this. We have fx equals to mod x to the power 2n plus 1 when n belongs to natural at x equals to 0. Now we have to check the differentiability at x equals to 0 to this function fx equals to mod of x to the power 2n plus 1 into n belongs to x equals to 0, ठीक है? So same situation, यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ना करके मैं डायरेक्ट चेक कर सकता हूँ ऐसे. See what we can write fx, can we write x to the power 2n
into mod x, correct, when n belongs to natural. See, check it, can be right, because x to the power 2n is even. So even में mod रहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है. Mod x square is similar as x square. Fine. So what I made it x to the 2n into mod x. Correct. Now अब mod x रह गया तो we know the property of mod x ऐसे कैसे आप कर सकते हैं, या तो वो प्रॉपर्टी से करें या डायरेक्ट डिफरेंशिएशन देखिए. f dash 0 at x equals to 0 we have to check. So limit x tends to 0 f0 plus h, डायरेक्ट जो डेफिनेशन था डिफरेंशिएबिलिटी की, f0 plus h माइनस f0 अपॉन h. हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव नहीं किया, मैं डायरेक्ट f डैश पे देख रहा हूँ कि वेदर ये डिफाइंड है या नहीं. सो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h डाला इधर. सो ये व्हाट विल हैपन, h टू द पावर 2n, 0 प्लस h इसमें आया तो ये h अपॉन h. ठीक है, ये h and h get cancel and this is 0. So it's a defined value. 0 came, so it is a defined value. ये नोन वैल्यू है, ये एग्जिस्ट कर रही है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट हो रही है. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव करके करें या राइट हैंड डेरिवेटिव करके करें, बोथ द केसेस यू विल फाइंड द जीरो विल कम. फाइन. सो दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0. ठीक है, यू कैन गो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव भी इक्वल करके कर सकते हैं आप. ठीक है, 0 प्लस 0 माइनस, बट द सिचुएशन विल कम द सेम बिकॉज दिस इज मॉड x, एक बार प्लस देगा और एक बार माइनस देगा. ठीक है, and then you check LSD and RSD, both the value will come 0. So rather using that, see this is the third methodology, I took directly f dash 0, definition of differentiation, where it says limit s tends to 0, f0 plus h minus f0 upon h, 0 plus h, wherever x you put 0 plus h, and f0 is 0, if you want I can write here 0 also, f0 is 0 ना, 0 डालोगे तो 0 ही होगा, and upon h. So it came 0. So 0 is defined value. 0 is known value, finite value. We have seen in definition of differentiability of a function, the limiting value f dash x should be finite. So at x equals to 0, this function is differentiable. Correct? Now we'll see some more situation. Look at this to check the differentiability. If you know continuity, how to get solve the continuity, so differentiability is similar. केवल ऑपरेटर वाले क्वेश्चन में थोड़ा केयरफुल रहेंगे. ऑपरेटर जैसे मॉड हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, देयर यू हैव टू यूज द प्रॉपर्टी, एंड इन ऑल द प्लेसेस यू हैव लिमिट. सो दिस इज नथिंग वेरी न्यू टू ऑल ऑफ यू. यू हैव सॉल्व so many questions of continuity where we have limit in each sum. So here also it is limit. Correct? So जितने कंटिन्यूटी आप बनाए हैं उतने सारे सम को आप डिफरेंशिएबिलिटी में भी डाल सकते हैं. वहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू यू हैव चेक. Here left hand derivative and right hand derivative you have to check. Right? Now see, we will have one more situation. Fx equals to mod x plus 1 plus mod x minus 1 for all x belongs to real. We have to check whether this function fx is differentiable for any value of x which belongs to real number. क्या ये differentiable होगा किसी भी वैल्यू पे? तो हम इस तरह के फंक्शन को पहले at x equals to 1 पे चेक करते हैं, because x minus 1 equals to 0, तो x equals to 1, या आप कह सकते हैं x minus 1 पे भी ले सकते हैं. So we'll start checking with x equals to 1, correct? When x equals to 1 पे चेक करेंगे, अगर if it is left hand derivative and right hand derivative equal आ गया, this function is differentiable. Similarly, we can check for -1, for 2, -2 and so on. अगर 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल है तो हो सकता है 2 पे भी नॉन डिफरेंशिएबल होगा, and so on. It is नॉन डिफरेंशिएबल for all x belongs to real. Correct? So first here it is modulus. So पहले तो फंक्शन हमारा डिफाइंड होना पड़ेगा. वो किस तरह से होगा? मॉड ऑपरेटर हटेगी, हमने fx at x equals to 1 पे सोचा पॉजिटिव, तो ये x ग्रेटर देन 1 लेते हैं अगर आप, तो ये x plus 1 is x plus 1, करेक्ट, और ये x minus 1 ही रह जाएगा, which is 2x when x greater than 1. पहली सिचुएशन होगी.
दूसरा, जब मैं x लेस देन 1 लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू भी ले सकते हैं आप इसको, लेस देन 1 लिया तो x प्लस 1 विल बी x प्लस 1 ओनली, बट यहां पे ये चेंज हो जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस 1, करेक्ट. सो दिस बिकम्स व्हाट, 2 व्हेन x लेस देन 1. हमारा फंक्शन इस तरह से डिफाइंड हो गया, करेक्ट. fx is 2x when x greater than 1, fx is 2 when x less than 1. ठीक है. अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं, LHD. सो लिमिट h टेंड्स टू 0, करेक्ट, एट x इक्वल्स टू 1 पे चेक हो रही है, 1 पे, तो लेफ्ट हैंड में 1 माइनस होगा, दैट इज f 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h. दिस इज द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डेफिनेशन, f1 minus h minus f1 upon minus h. At 1 पे we are checking. So now 1 minus h less than 1. 1 से छोटा कौन सा है? This one 2. So this is going to be 2 limit h tends to 0. And f at 1 पे क्या है? Equals to 1 पे भी 2 ही आएगा. 2 into 1 2 equal to भी है ना ये equal to भी है. तो 2 पे f1 पे ये क्या आएगा? 2 2 into 1 2. So this is 2 upon minus h. So 0 upon some quantity which tending to 0, it is not equal to 0, it is tending to 0. So 0 minus h is nothing but 0. Some students get confused, sir यहाँ पे आपने 0 लिखा तो ये 0 by 0 हो जाएगा. No, it is tending to 0. It is not 0, it is tending to 0. So that is why 0 upon h minus h is 0. So 0 is the left hand derivative, correct? Now we'll move to right hand derivative. RHD we will take. ठीक है डियर, ये बात क्लियर हो रही है सबको? पहले ऑपरेटर है, ऑपरेटर से आपको बाहर आना पड़ता है, जिसमें ग्रेटर और लेस देन इक्वल्स टू. तो हमारे दो सिचुएशन आए, ग्रेटर देन पे 2x, लेस पे हमारा 2 आया. नाउ वी विल हैव टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव व्हिच इज दिस, सिंपलीफाई किया, वी हैव 0. नाउ वी विल गो टू राइट हैंड डेरिवेटिव. राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट माइनस लिखा है, h टेंड्स टू सॉरी 0, हाँ h टेंड्स टू 0 प्लस ले लीजिए. सो f1 माइनस राइट हैंड डेरिवेटिव 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h. ठीक है, 1 प्लस h पे क्या होगा डियर, दिस सिचुएशन 2x. सो 2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस h, 2 इंटू 1 प्लस h एंड माइनस 2, f1 पे 2 है, अपॉन दिस इज h. सो डियर ये क्या रह गया, 2, 2h, h get cancelled, 2 get cancelled, so 2, and here we have 0. So LHD not equals to RHD. So this function is not differentiable at x equals to 1. Similarly, it is not differentiable in minus 1 also, minus 2 also, plus 2 also, plus 3. So this function is not differentiable at any value of x which belongs to a real number. This function, correct? So this way we have checked the differentiability of this type of a function. अच्छे से समझिए, ये ऑपरेटर कोई के सम्स में ले रहा हूं, बेसिक तो आपको करना ही है, वो तो आता ही है, मैं करूंगा अभी 2-3 और भी प्रॉब्लम. ऑपरेटर वाले सम को थोड़ा केयरफुली करें, या तो वो कंटिन्यूटी में हो या डिफरेंशिएबिलिटी में हो, ध्यान से थोड़ा उसके कंडीशन पे ध्यान से वर्कआउट की जाती है, करेक्ट? So now we will move to another situation. Look at this. ठीक है, क्लियर हो गया? कोई स्पॉट तो नहीं दिख रहा है? ठीक है, चलिए विल हैव अ नेक्स्ट प्रॉब्लम. इट इज fx इक्वल्स टू sin x माइनस cos x
x less than pi by 2, 2x minus pi plus 1 at x equals to pi by 2. Differentiability we have to check. What we have to check? Differentiability. ठीक है? So at x equals to pi by 2 पे अपने को क्या चेक करना है? Differentiability. चलेंगे? Left hand derivative, right hand derivative. We don't have any operator, so no problem. So we'll start with left hand. Point is x equals to pi by 2. Left hand derivative. Limit h tends to 0 minus f pi by 2 is your a minus h minus f pi by 2. A is pi by 2. This is the point a pi by 2 upon minus h. This is your left hand derivative. Clear? Now limit h tends to 0 minus, now we will call the condition 0 minus pi by 2 minus something. So pi by 2 minus something is what? Less than pi by 2. Sin x minus cos x. Correct? So we'll call sin, so wherever x we'll put pi by 2 minus h minus cos pi by 2 minus h, right? Minus. Now f pi by 2. At pi by 2, if you put here pi by 2, sin 91 minus 0, 1. So this is 1. F pi by 2 is 1. ठीक है? Equals to be है ना pi by 2 upon. This is minus h. Correct? So now here we have to solve the limit. Use this L'Hopital rule. Best way, if you convert that way also you can do, or use it L'Hopital. So when you use L'Hopital, what will happen? Cos pi by 2 minus h. H is a function. Minus h is minus 1. Fine? Minus cos is again minus sin pi by 2 minus h, and again minus h is minus. So it becomes plus. Fine? And minus 1 derivative is 0. Derivative of minus h is minus 1. Fine? Now we'll put h tends to 0. Cos 90 is 0. This is 0. Here this is 0 into minus 1, so 0. And here it is minus 1, because sin 90 here h is 0 upon minus 1, this is 1. So left hand derivative came 1. Now we'll check right hand derivative. Find here RHT. We'll go to RHT. So limit h tends to 0 plus f pi by 2 plus h minus f pi by 2 upon h. So pi by 2 plus h is x greater than pi by 2, 2x minus pi. So limit h tends to 0, f pi by 2 plus h, wherever x we put pi by 2 plus h. So 2 into pi by 2 plus h, correct? Then minus pi, then plus 1, and minus f pi by 2 is how much? F pi by 2 we came to know 1. So this is 1 upon h. Fine? Now see what will happen. 2 get cancelled, pi get cancelled. 2h, 1 and 1 get cancelled. So 2h upon h is 2. And here it is 1. So LHD and RHD not equal to. So this function is not differentiable at x equals to pi by 2. It is not differentiable because RHD came 2, LHD came 1. So function is not differentiable at x equals to pi by 2. Clear here? समझ में आया? जैसे आप कंटिन्यूटी करते थे सेम वे डिफरेंशियबिलिटी लॉपिटल भी हमने यूज किया, तो आप लॉपिटल भी यूज कर सकते हो. करेक्ट? सो डियर, these are few problems what I have taken in differentiability. So and then you will have couple of problems that I will provide you for homework, जो आप करिए homework में. It's very simple here. Continuity आप अच्छे से जान रहे हो तो differentiability is nothing. What is very important? You have to remember this formula. Limit h tends to 0, fa minus h minus fa upon minus h. Left hand derivative. Right hand derivative. Limit h tends to 0, fa plus h minus fa upon h.
सो ये दो डेफिनेशन आपको याद है LHD और RHD का, you can solve the differentiability type of a problem, correct? When you have to check differentiability of a function. ठीक है? Sometimes this segment student they don't find interesting, but I will say it's an interesting one there. It's a conceptual. Once you know the limit and continuity, differentiability is nothing. You can do it, correct? So take an interest, fine, and solve couple of sums. You will find definitely differentiability becomes very simple to all of you, correct? So with this note, we will have we'll start the differentiation part, correct? गो थ्रू कीजिए यहाँ तक जो भी आज अभी जो वीडियो भेज रहा हूँ मैं इस डिफरेंशियबिलिटी का, इसको अच्छे से समझिए और जो होमवर्क मैं दूंगा उसको आप अच्छे से करें, ठीक है? सो लास्ट 10 minutes and this 25 minutes, around 35 minutes, you go through this videos of differentiability. You will find it becomes very simple to all of you.